Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, in the previous video lecture, we discussed properties of factors. Now in this video lecture, let's learn properties of multiples. So first property is, every number is a multiple of 1. हर कोई number 1 का multiple है. For example, 1 into 1 is 1. 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3, and so on. So we can say that 1 is a multiple of 1, 2 is a multiple of 1, 3 is a multiple of 1, 4 is a multiple of 1, and so on. Similarly, 1000 is also a multiple of 1. So हर कोई number जो है वो 1 का multiple है. और आप शॉर्ट में ये याद रख सकते हैं कि 1 की multiplication table में हर कोई number आता है. Okay, so you have to remember that every number is a multiple of 1. Clear? Now students, next property is, every number is a multiple of itself. हर कोई number अपना multiple होता है. For example, 1 multiplied by 1 is 1. So 1 is a multiple of 1. Okay, then 2 is a multiple of 2, 3 is a multiple of 3, 4 is multiple of 4, and so on. So you can say that every number, चाहे 1 हो 2 और so on, कोई भी number हो वो अपना multiple होता है. Clear? Now students, third property is, every multiple of a number is greater than or equal to that number. So हर कोई multiple किसी number का या तो number के बराबर होता है या number से बड़ा. For example, multiples of 5 are 5 into 1 is 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, and so on. So these are the multiples of 5. Now see students, this 5 is equal to 5, then 10, 15, 20, 25, and so on. These are all greater than 5. So it means multiples of a number are either equal to the number or greater than the number. But a multiple of a number can never be less than the number. Clear? Now students, next property is, 0 is a multiple of every number. 0 जो है ये हर किसी number का multiple है. For example, 1 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, 3 into 0 is 0, and so on. So it means 0 is multiple of 1, 0 is multiple of 2, 0 is multiple of 3, and so on. So you have to remember that 0 is a multiple of every number. Clear? Now students, last property is, we can find as many multiples of a number as we want. किसी number के हम जितने चाहे multiples उतने multiples हम ढूंढ सकते हैं. For example, 2 into 1 is 2, 2 2s are 4. So these are the two multiples of 2. Now we can find many more multiples of 2, as many multiples as we want. Like 2 into 1000 is 2000, 2 into lakh is 2 lakhs. Clear? So जितने आप ढूंढना चाहे multiples उतने multiples एक number के हम ढूंढ सकते हैं. Clear? Now next is even numbers. Counting numbers which are exactly divisible by 2 are known as even numbers. So ऐसे numbers जिनको exactly 2 से divide होता है, ऐसे numbers को हम कहते हैं even numbers. For example, 8, 162, 906, etc. These are examples of even numbers. And students, remember, every even number has 0, 2, 4, 6 or 8 as its ones digit. जब भी आप नंबर के एंड पे नंबर का वंस डिजिट अगर 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8 वंस डिजिट अगर इनमें से कोई हो, दैट मीन्स वो नंबर इवन नंबर है. सो यू हैव टू रिमेंबर एवरी इवन नंबर हैज 0, 2, 4, 6 और 8 एज इट्स वंस डिजिट. क्लियर? Now students, next is odd numbers. So counting numbers which are not exactly divisible by 2 are called as odd numbers. For example, 3, 3, 1, 8, 9, 5, 7, etc. So ऐसे numbers जिनको 2 से exactly divide नहीं होगा. That means अगर आप ऐसे numbers को 2 से divide करेंगे तो कुछ न कुछ remainder रह जाएगा. So ऐसे numbers को हम कहते हैं odd numbers. And students, remember, every odd number has 1, 3, 5, 7 or 9 as its ones digit. So odd numbers जो है उनका ones digit जो होता है वो इनमें से कोई हो सकता है, या तो 1 होगा ones digit पे, और 3 और 5 और 7 और 9. Clear? Now we can easily find whether a given number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 or not by using divisibility tests. So students, हम divisibility tests का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो डिविजिबल है कि नहीं है. So let's first learn about
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। कैसे हम टेस्ट करेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। So a number is divisible by 2 if its ones digit is any one of 0, 2, 4, 6 और 8। So जब भी आप किसी नंबर के एंड पे यानी जब भी आप किसी नंबर का वंस डिजिट इनमें से कोई देखे, यानी अगर वंस डिजिट पे 0 होगा, 2, 4, 6 और 8, देन इट मीन्स वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। For example, this 312. This 312 is having 2 at one's place. It means this number is divisible by 2. Similarly, this number 468. This number is having 8 at its ones place. So it means this number is also divisible by 2. Now, if we take suppose 3, 5, 7. This number is having 7 at one's place. So it means this number is not divisible by 2. Clear? Now next is test of divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. So एक नंबर कब divisible by 3 होता है? That means एक नंबर को कब 3 से डिवाइड होगा? जब वो जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम अगर वो divisible by 3 हो, then it means कि वो नंबर भी divisible by 3 होगा। For example, this 10671. ये जो नंबर है क्या ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमें पहले ऐड करना है इनके डिजिट्स को। दैट मीन्स 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1। नाउ 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 इज 15 एंड वी नो दैट 15 is divisible by 3 because 3 के टेबल में आता है ना 15, so 15 is divisible by 3, so it means this whole number is also divisible by 3. So जब डिजिट्स का सम divisible by 3 हो तो वो नंबर भी divisible by 3 होता है। क्लियर? Now next is test of divisibility by 4. अब कैसे पता करेंगे कि एक नंबर divisible by 4 है कि नहीं? So a number is divisible by 4 if its last two digits are 0 or the number formed by its last two digits on the extreme right is divisible by 4. So एक नंबर तभी divisible by 4 होता है अगर इसके राइट साइड पे जो लास्ट टू डिजिट्स अगर नंबर के 0 होंगे तो वो नंबर divisible by 4 है, या अगर एक्सट्रीम राइट साइड पे यानी जो लास्ट टू डिजिट्स है अगर वो डिजिट्स divisible by 4 होंगे तब भी वो नंबर divisible by 4 होगा। Just like this is an example of a number which is divisible by 4. This number is having 36 on the extreme right. यानी ये जो नंबर है इसमें लास्ट के दो डिजिट्स जो है वो 36 हैं and we know that 36 is divisible by 4 because we know that 4 9 are 36. It means ये 36 जो है ये divisible by 4 है। इसका मतलब है ये पूरा ही नंबर divisible by 4 होगा। Clear? Then this one is this number is having two zeros. This number is having zeros at its the last two digits of this number are 0, so this number is also divisible by 4. So जब किसी नंबर के लास्ट के दो डिजिट्स 0 हो तो वो नंबर भी divisible by 4 होता है। क्लियर? So लास्ट के दो डिजिट्स 0 हो तब भी divisible by 4 है, या लास्ट के दो डिजिट्स अगर divisible by 4 है तब भी वो नंबर divisible by 4 होता है। क्लियर? Now next is test of divisibility by 5. So अब एक नंबर divisible by 5 कब होगा? A number is divisible by 5 if its ones digit is 0 or 5. जब नंबर का वंस डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो, मीन्स एंड पे अगर 0 है तब भी divisible by 5 है और अगर 5 होगा तब भी divisible by 5 है। और अगर वंस डिजिट पे 0 या 5 ना हो, 0 और 5 के बगैर कुछ और हो, देन इट मीन्स कि वो नंबर divisible by 5 नहीं होगा। See students, this 5780, this number is having 0 at its ones place, so this number is divisible by 5. Similarly, this is also divisible by 5. Now this number is having 5 at its ones place, it means this number is also divisible by 5. Similarly, this is also divisible by 5. Now students, test of divisibility by 6. So a number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3. So एक number 6 से divisible तभी होता है जब वो 2 से भी divisible हो और 3 से भी divisible हो। For example, this 58674, this number is divisible by 2. ये number 2 से क्यों divisible है? Because end ones digit पे 4 है and we know that 4 is divisible by
2, so this number is also divisible by 2. So ये जो digit है ये divisible by 2 है. Now we'll check whether this number is divisible by 3 or not. अब ये number divisible by 3 है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, हमें इसके digits का sum करना है. Now 5 plus 8 plus 6 plus 7 plus 4 is 30, and we know that 30 is divisible by 3 because 3 10 are 30. So it means this number is divisible by 2 and this number is divisible by 3 also. So it means this number is divisible by 6 also. So जब एक number 2 से भी divisible हो और 3 से भी divisible हो, it means ये number 6 से भी divisible होगा. Clear? So students, I'll finish this video here. In the next video lecture, we'll discuss further divisibility tests. Till then, Allah Hafiz.